start with my screen sharing. Do we remember what we did? Yes, only communicating with others, but we are also communicating with ourselves. So, what are, even if we understand the process of communication, being effective communicators may take time. So, have you heard of interpersonal and intrapersonal communication? Has anybody heard of it? What's interpersonal and what's intrapersonal? Anyone would like to share interpersonal communication? Has anybody heard of? You can please No, respond. ma'am. No, not? Okay. Interpersonal skills we have, means I have heard about it, but maybe the communication between two people. Yes, absolutely. So whenever one is inter and one is intra, so whenever, like in your college, if you are having a competition, like there is debate competition and other colleges are involved, so it becomes an intercollegiate event where your college is participating with other college in a competition. So similarly, communication also, I could be talking to myself, I could be talking to you. So when I'm talking to myself, it's all about intra. मैं अपने आप से बात कर रही हूँ. And when I'm talking with others, it becomes inter. So today we are going to learn how to understand this process of intrapersonal communication and interpersonal communication. So what is intrapersonal communication? Let's understand that first. इंट्रा में हम कम्युनिकेट, जैसे मैंने कहा कि वी आर नॉट ओनली टॉकिंग विथ अदर्स, वी आर ऑल्सो टॉकिंग विथ आवरसेल्व्स. तो जब हम अपने आप से बातें करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? कुड एनीबॉडी प्लीज शेयर, अपने आप से बातें करने को क्या बोला जाता है? डू यू नो वी टॉक टू आवरसेल्व्स? डू यू नो? मराठी में स्वगत बोलते हैं. हाँ, क्या बोलते हैं? मराठी में उसको स्वगत बोलते हैं, मतलब अपने आप से बातें कर रहा. करते सेल्फ हैं ना, डिस्कोर्स अपने है. आप से बातें करते हैं कि नहीं करते हैं? पहले ये हाँ, बताइए. करते हैं करते हैं करते करते हैं. हैं ना. मैम. तो खुद उसको को उसको समझाते हैं अपन. सेल्फ टॉक, जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है. सेल्फ टॉक, वो कॉन्वर्सेशन सेल्फ के साथ चल रहा है. कोई भी आपने एक्टिविटी की, उसके बाद अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वो आपका पूरा कॉन्वर्सेशन अपने साथ चलता रहता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसी ने कुछ कहा, खराब लग रहा है, किसी मोमेंट पे आपको कुछ और कहना था, आप नहीं कह पाए, तो बाद में आपका कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन विथ योर सेल्फ. आई शुड हैव सेड दिस, आई शुड हैव नॉट सेड दिस. तो पहले तो हमें ये, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे हमने कल कहा था कि इट इज गोइंग ऑन एट ऑल टाइम्स इन ऑल कॉर्नर्स. तो होता क्या है कि वी आर वेरी गुड एट जजिंग अदर्स and talking about others. So even if through the screen you can see me, you can hear me, you can understand little characteristics about me, and you will form an opinion and perception about what ma'am could be all about. But the challenge is कि आंखें जो होती हैं, हमारे जो senses होते हैं, they help us see the outside world. We cannot see what we are from inside, because how do I understand what I am from inside, or how will you understand what you are from inside? We wait for others to tell us. और जब हमें दूसरे जैसा बोलते हैं, हमारा वैसा ही अपने बारे में ओपिनियन बन जाता है. So suppose people around you are telling you that you are extremely good, you are powerful, you are amazing, you are awesome, you are talented, you are gifted, we will believe in this. But the others around you are telling you that you are not good, not competent, not motivated enough, so that also we will follow. So what's happening? These outer voices are becoming the inner voices for us. And when we are sitting in silence, sometimes these inner voices start raising their volume. And then we start indulging in self-talk. So ये जो inner voices हैं, जो what we hear from outside, outer voices, they have to be very carefully filtered.
And that is why we say that we should not let it affect us, because agar wo affect karengi to my perception about myself will change. So in US, there was this I mean it happened by default कि एक institution में there were about 40-50 students, and their information was fed into the computer. और कंप्यूटर ने उनको टर्म कर दिया था कि some are brilliant, some are weak, some are not so good, ऐसे categorize कर दिया था. But some error took place. And due to that error, the brilliant children were termed as weak and the weak children were termed as brilliant. And the teachers did not know about it. When the information went to the teachers, they started treating the children as the but हुआ क्या उसके बाद like this. और 6 months के बाद जब पता चला कि ये तो कंप्यूटर पे एरर हो गया है, then it was discovered कि brilliant children तब तक weak बन गए थे and weak children had become brilliant. Why? Because the outer voices were treating them in that manner. तो जो हमारा आउटर एनवायरनमेंट है, जो आउटर कॉन्वर्सेशन है, the way we are listening to these voices, in the same way we are forming opinion about ourselves. So it is very, very important. If you want to change it, then we have to change the way we are addressing others. Then others will automatically, change the way they are dealing with us. So that is why it is very important to understand this art of intrapersonal and interpersonal communication. So are you ready to learn some more about it? How to become effective communicators का ही एक और आगे step है. सबसे पहले तो हमें इंट्रा पे ध्यान देना चाहिए. Yes, thank you so much. Thank you. तो इंट्रा पे भी, खुद पे भी, and as well as how are we talking with others. Both are extremely important. ऐसा नहीं कर सकते हम, थैंक यू सो मच. सो ऐसा नहीं कर सकते हम कि दूसरों पे ही ध्यान दें और खुद पे ध्यान नहीं दें, और ये भी नहीं कर सकते कि खुद पे ध्यान दें और दूसरों पे ध्यान नहीं दें, because both are equally important and extremely crucial. And when the balance is maintained between the two, then we can say that we are effective communicators. अगर ये balance misbalance हो गया या disbalance हो गया है, then somewhere something has to change. So very, very important. And for that, थोड़ी थोड़ी सी चीजें हम इसके बारे में आज समझने वाले हैं. So the basis process of communication, हम we are going to start with I'll start with my PPT. Just a minute, I'll just, yeah. Can you see my PPT? No, not yet, I think. Just a minute, I'll just start. Share. Yeah. Yes, ma'am. It is visible now. It is visible now? Yeah. Okay. So interpersonal skills we are going to be learning about. So jaise, this is in continuation with what we did yesterday. उसी का एक और step है. So just understanding communication is going to be incomplete if you are not going to put it into practice. तो कल हमने थोड़ा सा इनके बेसिक्स करे, कॉन्सेप्ट्स करे. टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द एक्चुअल रियल प्रॉब्लम्स वी मे फेस, and when such problems come up, how do we handle these problems? Because the world is revolving around communication today. आप अगर देखेंगे तो इट इज सेड दैट योर हार्ड स्किल्स, जो आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन बिकम्स योर हार्ड स्किल्स. एंड कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, ये जो सारे 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, ये हमारी सॉफ्ट स्किल्स बन जाते हैं. सो व्हाट हैपेंस, हार्ड स्किल्स everyone may be having similar, सबके पास डिग्री होगी, सिमिलर डिग्री होगी.
बट जब हमको रेस में आगे जाना होता है तो सॉफ्ट स्किल्स डिटरमाइन हु ऑल आर इक्विप्ड विद द राइट टेक्निक्स एंड सॉफ्ट स्किल्स. They are the ones who march ahead. So that is why sometimes it is said कि success के लिए 85% of your success depends on the way you are communicating. Just 15% depends on the technical skills. Because technical skills everyone has, but soft skills some may have and some may not have. So that is why it's very important to imbibe these soft skills in our day-to-day practice. So सबसे core, सबसे important, सबसे relevant, सबसे significant is communication. And when we understand this, you will realize that the nature is also communicating something. The animals are communicating something. The plants are communicating something. The silence is communicating something. Everything is sending a message. And when we become alert and sensitive to respond to this, then somewhere our lives start moving in a more positive direction. So that is why this is extremely, extremely crucial and very, very significant to understand. So this is the very basic definition of communication, which we have already covered yesterday, but we are going to take it forward from here. So simple process of passing information, we are sending information and understanding the information. That is the basic process. So there is a sender, there's a message, there's a receiver, there's an interpretation. When that interpretation is the right way done, then it is, we say it is effective. So just a reinforcement of what we did yesterday. तो because ये जो हमारा stepping stone है, जो हमारी foundation है, we are just strengthening that foundation. So this was already done. When the message is understood, we say, wow, effectively communicated. Thank you so much. I saw the message. Thank you. Thank you so much. So interpersonal में क्या हो रहा है? Whether you are interacting with the students or your colleagues or your family members or friends or anywhere in the marketplace, कहीं भी है, आपका interpersonal communication process is going on at all times. So right now also, अगर हम ये जो अभी का जो process चल रहा है, where I'm sharing something with you, you are responding and receiving that information, this is the process of interpersonal communication. Because from one person to another, and this is in relevance everywhere at all times. So the art of exchanging messages between two or more people. अब इसमें challenges क्या आते हैं? I may be trying to express something with all sincerity from my side, and I'm putting in all the efforts, but the message could get delivered in an ineffective manner. It is happening at all times. So, what are the measures that I need to keep in consideration? तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम 7%, जैसे मैंने कल बताया था, 7% वर्ड्स कर रहे हैं, 28%, 38% हमारी बॉडी लैंग्वेज है, एंड सॉरी 38% is a voice and 55% is a body language. So this is the basic. अब अगर हमें message, this also we did yesterday. So now look at this. What do you see here? There are two images. In one image, the mirror image is talking to me. And when the mirror image is talking to me, it is intrapersonal. So it is like I am having a conversation with my own self. And that could be at any time. That could be in the morning, that could be when you are in a meeting, that could be going on right now also, that could be, when you are all by yourself. So intrapersonal communication is going on.
and sometimes we may not even realize. But this intrapersonal is very important because this directly affects our interpersonal. क्योंकि अगर इंट्रापर्सनल में मैं खुश हूं and I'm talking positive with myself, I'm going to take that positivity to others also. But in my intrapersonal, in some way, I'm dejected or sad क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि I'm not good enough. So interpersonal may be that same feeling may get conveyed. So intrapersonal and interpersonal are extremely very closely connected. So what should we, जो जब भी हम किसी से बातें करते हैं and we understand that this person is not looking too happy, empathy is required there. Empathy कल हमने समझा था, empathy is to understand the feelings of the other person. So if I understand that this person is not feeling well emotionally, I can immediately reach out to that person and spread some happiness. So, how many of us? So, here I want to talk about a very beautiful concept that I recently uncovered, and it has really brought so much more happiness. So, जैसे हम अगर कहते हैं कि अगर मुझे किसी से all the time positively conversation if I have to carry out, that means I have to have a lot of positivity in my own self. Otherwise, how do I carry out that positive conversation? So, where is this positivity? Where is it? So, all of us are carrying an emotional bucket with us, invisible, which is invisible. And I'm sure if I ask you all, are you happy at this moment? Some may say yes, some may say no. So, what is the answer if I say, are you happy at this moment? Or are you happy in your own lives? Or are you, yes, I can see one thumbs up and some more. Yes, we are Yes, happy. yes, some more. We are happy and we want to, all those. Yes, and that means our emotional bucket is filled with positivity. There is a lot of positivity there. And if I am happy, I can share that positivity with others. So, to be strong, thank you so much. I'm getting all thumbs up. So, to spread that happiness, I have to have a lot of positivity in my own emotional bucket. And since you all are so happy, I'm matlab, it's very encouraging, extremely encouraging and extremely fulfilling to see that if we are positive, if we are happy, that means in your interpersonal skills also you are definitely spreading happiness and positivity. And when we are filled with happiness and positivity, and when we are empathetic, we can understand what is lacking in the other person's life. And then we can share some happiness there. So, interpersonal skills are people. What are interpersonal skills again? So, that is the ability to understand and interact effectively with others. This is extremely important. Understand and interact, both the things. Khali understanding is not enough. Khali interacting is not enough. Interacting with understanding. I completely empathize with you. So that means empathy is very important. I should be ready to understand the mood and temperament of others. Because if I am understanding, मुझे दूसरों के mood समझ में आएंगे. So it is all about emotional intelligence also. So some people you must have seen are extremely good in people skills.
They know the way to talk with others. They are always in the good books. They always get away with what they want in life because of the way they are communicating. They understand others so well. So interpersonal इंटेलिजेंस है ये एक तरह की उनके पास, और ये सबके पास नहीं होती। पर इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि अगर हम इसे प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे पास भी आ जाती है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। पहले तो मुझे ये बताइए, बिकॉज ऑल आर एजुकेटर्स हियर, what do we understand by intelligence? या हम अगर बोलते हैं कि इसका IQ बहुत अच्छा है, so IQ means intelligence quotient. So what is the meaning of intelligence? How do we measure intelligence? Anybody? How do we measure intelligence? या हम क्या समझते हैं intelligence के बारे में? Talking and communication. Okay. Yes, I can see your chat Intelligence section means में. acquiring knowledge and applying it to the particular field. Means if we are saying about the emotional intelligence, then acquiring the knowledge emotionally means to understanding the other person, understanding to ourselves, and applying the same thing in case of the others, to understand the others. Means if we Yes. understand ourselves, then we can apply that knowledge to others. That is the intelligence. Absolutely. Do you know Bloom's taxonomy, जो कि education का जो pyramid है? You Yes. are on mute, Yeah. ma'am. Bloom's taxonomy, has anybody heard of? जिन्होंने की education के 6 levels बताए थे. The first one was knowledge. Second is understanding. Third is application, जो आपने बताया कि knowledge, understanding and application. Then synthesizing, evaluation and creation. So जो आपने अभी बताया, knowledge, understanding and application. So intelligence is the cognitive ability to read, write and understand. That is simple as IQ में अगर हम किसी भी बच्चे को बोलते हैं कि भैया ये बहुत intelligent है, that means he has this ability to read, write and understand. And he is very good at it. बाकियों से ये जल्दी पढ़ लेता है, समझ लेता है, लिख लेता है. And some may take time. तो अगर बहुत अच्छा कोई कर लेता है तो हम कहते हैं इनका IQ हाई है, किसी का टाइम लगता है तो हम कहते हैं इनको थोड़ा टाइम लगता है, दैट्स एवरेज. सो इंटेलिजेंस is the cognitive ability to read, write and understand. So interpersonal intelligence means to understand human behavior, how people are behaving, how are their moods and temperaments, how are they actually responding to a certain situations, how are they managing their emotions, and how can we make it better, how can we contribute something of value there. So this is interpersonal intelligence. Is it clear? Where we are understanding and interacting effectively with others, we are sensitive to the moods and temperaments of others, we can see multiple perspectives, and we are good with our verbal and non-verbal communication, then it is interpersonal. We are very good interpersonal communicators. Okay? So now we are going to do some activities on this, and I want you to रिस्पॉन्ड. और इंट्रापर्सनल में क्या होगा, मेरे अंदर क्या है, मुझे क्या चाहिए, हाउ कैन आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, हाउ कैन आई बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. सो हर चीज में हम अपने अंदर आंसर्स ढूंढते रहते हैं, एंड दे आर इंट्रोस्पेक्टिंग, they need understanding. Most of the times intrapersonal intelligence वाले लोग दूसरों को समझने में उनको challenges होते हैं, so they want others to understand them. All right, are we getting this? So Yes. introverts, I'm going to do this. Yeah, what do you see here? Two perspectives are there. Two perspectives are there. One is saying 4 and the other is saying, Three. so what is correct? Which one is correct? Both are correct. Huh? Both are correct. Both are correct at the end.
both are there and both are correct. तो how do we, what do we do? हमको जब पता चल गया कि ये correct है, कैसे हमें पता चलेगा कि both are correct? We If you stand understand in that the they have shoes their of own others, means shoes of them. Okay. तो जैसे अगर मैं इस Try साइड, to understand others' perspective then. हम yes, थर्ड absolutely. तो थर्ड जैसे, पार्टी होके देखेंगे तब हमें पता चलेगा इसमें। हाँ, कैसे सर, क्या देखेंगे? थर्ड पार्टी मतलब वो दो पार्टी है, हम तीसरे पार्टी से देखेंगे, हाँ, हमें दिखता है कि वो दोनों राइट है। absolutely. On the basis of their perspective. On the basis of their perspective, absolutely right. मेरे जहाँ पे मैं, यहाँ पे आई एम स्टैंडिंग हियर, मुझे 4 दिख रहा है, आपके नजरिए से 3 दिख रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पहले मुझे अपनी पोजीशन यहाँ पे जाने की बजाय आई शुड पुट माई सेल्फ इन योर शूज, और अगर मैं आपके नजरिए से देखूंगी तो शायद मुझे भी 3 दिखेंगे. And then you will say, yes, I agree, it is 4, but if I see from your point of view, it is 3 also. And similarly, this person can also see कि ये 3 है, but आपके नजरिए से अगर मैं देखूं तो 4 है. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट, 4 3 4 3, दोनों लड़ते रहेंगे. There can be no compromise and there can be no understanding. The only way I can understand is when I say मेरी side से 4 है, but let me go to your side and see how it looks from there. And when I change the position and see from there, then I can say, oh yes, you are right, it could be 3. So what have I done? I have changed the perceptual position. तो जैसे मैंने कल आपको एक कहानी बताई थी कि the person was traveling in a train and suddenly father with 2 children boarded the train where children were very rowdy and indisciplined. और सबने कहा कि अरे ये तो बहुत rude हैं, बहुत बदतमीज हैं. तो उन्होंने father से पूछा कि why aren't you doing something about it? And what did father say? Father said, I'm so sorry, I didn't realize their mother just passed away. And the moment they came to know कि mother has passed away, everything changed. क्योंकि वो अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाके उन्होंने देखा. जैसे एक और कहानी है कि there was a father traveling in the train with a grown up son of 30 years old. 30 years old बेटा जा रहा था और उनके 55 years old father जा रहे थे. और जब बच्चा जो है ये 30 years old man, he was looking out of the window and he was screaming at everything. Hurry, look at trees, look at this hut, look at this plateau, look at the grass, look at this, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हर चीज को वो इतना excitedly बयां कर रहा था. तो बाकी लोग बड़े परेशान हो गए. उन्होंने कहा अरे भाई, सबको दिखाई दे रही हैं चीजें, ये आपको इतना एक्साइटमेंट की क्या जरूरत है? तो उनके पिता ने कहा कि आप लोगों के लिए ये चीजें नॉर्मल है, पर मेरे बच्चे की बचपन में आईसाइट चली गई थी एंड नाउ ही इज सीइंग एवरीथिंग अगेन आफ्टर अ गैप ऑफ 25 years, सो ही इज एक्साइटेड. तो अब क्या हुआ कि मैंने अपने पोजीशन दूसरों की पोजीशन में जाके रखा, सो वन कैन अंडरस्टैंड थिंग्स विथ अ डीपर पर्सपेक्टिव. एम्पैथी यही है. डज दिस मेक सेंस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? Yes, ma'am. Yes. So from my angle, why are they talking like, why is he behaving like this? Why are they doing like this? Why don't they understand? That is from my perspective. But the moment I get to know why this person is doing like this, I change my perspective. I put myself in the other person's shoes. And then I realize, oh my God, maybe I made a mistake somewhere. So that is empathy. And that is an integral part of communication, interpersonal communication. Nahi to hoga kya? I am talking about myself, the other person is talking about herself or himself, and I am not seeing your point of view, you are not seeing my point of view. There's going to be conflict.
and there's not going to be any kind of understanding. That is why this perceptual position is very important. So जैसे अभी सर ने बताया था कि अच्छा, what do you see here? Tell me. What do you see here? Ma'am, two Faces. faces are Two there. persons. Two faces. In the first faces. picture, you see two faces. What do you see in the second picture? Again two faces. There are two faces. And in the third picture? Again two Again two faces. faces. In Two all faces. the images, pictures, the figures are the same. There Yes. are Yes, two yes, ma'am. faces. Yes. Only the colors have changed. Yes, Colors yes. are two. Colors black, white कर दी और यहाँ पे they have done the outlining. Otherwise, the image is the same. पर थोड़ा सा color को change करने से perception change हो गया. So that is what happens कि कितनी बार चीजें हमको जैसी हैं वैसी नहीं दिखती हैं because we are looking at everything from our own lens. तो मेरा जो चश्मा है उससे मुझे दिखेगा, पर मेरा चश्मा अगर मैंने आपको दे दिया तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि वो मेरा परसेप्शन है, आपका परसेप्शन कुछ और है. तो जब इंटरपर्सनल में हम बातें करते हैं तो वी ट्राई टू सी द परसेप्शन थ्रू व्हिच द अदर पर्सन इज लुकिंग एट थिंग्स. Yes, okay, thank you so much. Yes, does this make sense? Yes, absolutely. So आपने वो six blind men and an elephant वाली कहानी सुनी है? अच्छा चलिए मुझे बताइए, अगर किसी को एलिफेंट डिस्क्राइब करना है तो आप एलिफेंट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एलिफेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कैसे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन जस्ट शेयर इन अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर कि एलिफेंट को अगर डिस्क्राइब करना है तो हाउ वुड वी डिस्क्राइब इट? Big body, yes, and four legs, big sized animal, yes, and Small eyes, small small eyes, tail, and Big ears. big ears, four legs, big nose, trunk, Long white tail, animal, yes, yes, long yes, tail. long tail, yes. Hmm. और सबका नजरिया सही है क्योंकि हम उस एनिमल की अलग अलग चीजें बता रहे हैं. तो ये देखिए, ये टोटालिटी में हम पिक्चर को नहीं देख पा रहे हैं. अगर हम कह सबके आगे पट्टियां लगी हुई हैं, हमारे सारे परसेप्शंस के आगे हम खाली अपने अपने परसेप्शन से लिमिटेड देखते हैं. तो अगर ऐसे ही उन्होंने पहली बार किसी को एलिफेंट दिखाया तो जो कानों को छू रहा है वो बोल रहा है इट्स अ फैन, जो उसकी स्किन को छू रहा है वो कह रहा है इट्स अ वॉल, जो टेल को छू रहा है वो कह रहा है इट्स अ रोप, कोई लेग्स को छू रहा है तो कह रहा है इट्स अ ट्री, कोई ट्रंक को छू रहा है तो कह रहा है इट्स अ स्नेक, और कोई दांतों को छू रहा है तो कह रहा है इट्स अ स्पेयर. तो सब अलग अलग नजरिए से एक ही चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है एंड दे कैन ओनली लुक एट अ सर्टेन एस्पेक्ट एट एनी गिवन पॉइंट. तो ये तो कहानी है, दिस वी कैन सी इन फ्रंट ऑफ अस, बट हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर डूइंग दिस. We are only जो हमारे सामने चीजें दिख रही हैं, we are only looking at that aspect and we say कि things are like this. Somebody is looking from a different angle and will say नहीं चीजें ऐसी हैं. तो interpersonal skills में बहुत जरूरी है कि it's a rope from my end. What is it like from your end? It's a fan. Okay, so that means an elephant is a rope and it is like a fan, it is like a wall, it is like a tree, it is like a snake, it is like a spear. Now we are including everything, inclusion of everything. Otherwise we can say it's a rope, no, it's a wall, no, it's a fan.
अगर हर इंसान अपने ही नजरिए पे अड़ा रहेगा तो हमें कंप्लीट पिक्चर आएगी ही नहीं। पर अच्छी इफेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए व्हाट डू वी डू? वी से ओके, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज अ रोप, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? इट्स अ वॉल, ऑल राइट, सो इट्स अ रोप एंड अ वॉल and a fan and a spear. So I am including everyone's point of view. This is a very important skill. Does this make sense? Yes, ma'am. Yes? तो most of the times हम ऐसा करते हैं ना कि मेरे एंगल से जो दिख रहा है वही सही है। होता है कि नहीं होता है? होता है। मेरे Maximum साथ time, भी होता है। maximum सब, time होता है, ma'am. हाँ? Yes? Maximum time hota hai because we see the things as per our perception and we think that I am always right. Yes, yes. So interpersonal में क्या होता है? Effective interpersonal में what do we have to do? My point is right, but you could also be right. है ना? So I am right, but I understand what you are trying to convey. So I will look at it from your point of view also. अगर हम इतना ही बोल दें तो हमारी चीजें बेहतर हो जाती हैं। All right. Yes. Does this so perception sorry. So perception क्या हो रहा है? ये है perception. Perception में हम क्या करते हैं कि जो हमारे, देखिए हमने जैसे दुनिया को कैसे जाना, दुनिया को कैसे पहचाना, जो मेरे सेंसेस ने मुझे बताया, मैंने उसके हिसाब से दुनिया की एक इमेज बना ली। तो मेरे सेंसेस ने, मेरी आंखों ने मुझे जो दिखाया वो मेरे दिमाग में उसकी इमेज बन गई। जो मेरे कानों ने सुना उसकी इमेज बन गई, जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसकी इमेज बन गई, जो मैंने टेस्ट किया उसकी इमेज बन गई। तो उस इंफॉर्मेशन को मैंने दिमाग में इंफॉर्मेशन फीड करते रही और दिमाग उसको ऑर्गेनाइज करता रहा, आइडेंटिफाई करता रहा, इंटरप्रेट करता रहा और मेरा एक नजरिया बन गया। This is how a perception is formed. When the world that we have perceived through our senses and sent that information to our brain, and our brain has organized and identified and interpreted that sensory information in order to represent and understand our environment, that has become my perception. अगर मुझे एक तरीके के लोग मिले हैं, अच्छे लोग मिले हैं लाइफ में, तो मेरा परसेप्शन है कि people are all nice. But if I've met the kind of people who are extremely hurtful and rude, so my perception could be that people are out to hurt and belittle each other. But there may be some who may say, no, people are all kind. They are very, very kind. बहुत compassionate हैं, बहुत sympathetic हैं, बहुत empathetic हैं. Somebody may say, no, it is completely wrong. People are cruel. तो अब सबका परसेप्शन अलग अलग हो गया बेस्ड ऑन व्हाट the way the information in the brain has been organized, identified and interpreted. Does this make sense? We have to understand this. So Yes, ma'am. Yes. होता क्या है कि चीजें हम अपने परसेप्शन से देखते हैं. It is very difficult for me to look at things from your paradigm. Perception is also a paradigm shift जिसको बोलते हैं. तो जैसे, तो हमेशा याद रखिए ये कहानियां छोटी छोटी, कि जब हमें पता नहीं होता है दूसरे का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड द मोमेंट वी गेट टू नो कि भाई इनका ये चैलेंज है, तो एकदम से पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है. द परसेप्शन चेंजेस. सो दैट इज व्हाई द परसेप्चुअल पोजीशन चेंजेस. ये जैसे ये चेंज हो गया, मैं पहले अपने नजरिए से चीजें देख रही थी, फिर मैं दूसरे के नजरिए से चीजें देखने लग गया. और अगर जैसे सर ने बहुत राइटली ही हैड मेंशन्ड कि देयर इज अ थर्ड पर्सन्स पर्सपेक्टिव आल्सो. सो हमेशा जब भी ऐसा होता है व्हेन टू पीपल आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट, they both think they are right. I am right, you are right. I am right and the other person will say I am right.
अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं बिकॉज दे बोथ थिंक दे आर राइट, और एक तीसरा इंसान देखकर हंस रहा है बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम नोबडी कुड बी राइट. So this is what happens कि most of the times हमें लगता है कि so it is not that important कि हम जो सोच रहे हैं वही बिल्कुल लकीर की फकीर है, उसके बाद कुछ चेंज नहीं हो सकता. ये हमें आइडियोलॉजी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए अपने बिहेवियर में. और आजकल कहते हैं विनिंग बिहेवियर इज वन विच इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल. तो जहां पर आप फटाफट दूसरे का परसेप्शन देखने के लिए रेडी हैं और दूसरों को अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी हैं, सो दैट यू नो ब्रिंग इन अ लॉट मोर maybe clarity in how you are dealing with others. So this, just a minute, let me see. Yes, okay, so I'll just go back to my intra and inter. सो इंट्रा में क्या हो रहा है कि वी आर इंटर में नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज बिटवीन टू पीपल. और होता क्या है, आई हैव सीन दिस विथ एक्सपीरियंस. जब हम बहुत ज्यादा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में इंडल्ज करते रहते हैं, एवरी टाइम आई एम टॉकिंग विथ माई सेल्फ और एवरीथिंग, my perception, my rigidity वो स्ट्रोंगर और स्ट्रोंगर होती जाती है, क्योंकि इंट्रापर्सनल में मैं अपने आप को ही विश्वास दिलाती रहती हूँ कि चीजें ऐसी हैं जैसे मुझे दिख रही हैं. और फिर मेरे को सडनली टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव बिकम्स अ लिटिल चैलेंजिंग, क्योंकि मेरे अंदर ये डीप रूटेड बिलीफ बन गया है कि चीजें वैसी ही हैं जैसे मैंने देखी हैं. तो इंटर, जब हमें दूसरे से बात करनी है तो ये इसके लिए मुझे पहले अपने बारे में भी पूरी समझ होनी चाहिए. सो इंट्रापर्सनल को हमें इतना थोड़ा इम्पोर्टेंस होना चाहिए बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प अस बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स. और इंट्रापर्सनल को हमेशा पॉजिटिव में रखिए, always. So whenever you are talking to yourself, there are positive affirmations. So morning when you get up, I will be happy today. Happiness is also a decision. Hope is a decision. Being positive is a decision. Being helpful is a decision. So I choose to be positive today. I choose to be happy today. I choose to be extremely enthusiastic, energetic, and empowering today. So empowering में आप खुद के पास जो पावर है वो तो है ही है, but you are sharing this power with others also. So when you make these resolutions to yourself in the morning in your interpersonal communication, then in your interpersonal communication everything is going to get transferred. Yes, does this make sense or too much of gyan ho gaya? Hello, It make a sense, ma'am. No, ma'am. it makes sense क्योंकि ज्यादातर टाइम हमारा इंटरपर्सनल कब चलता रहता है, हमारे इंट्रापर्सनल पे जैसा हमें लग रहा है हम उसी तरह से दूसरों के साथ भी बातें करते हैं. मेरा मूड अच्छा नहीं है तो मेरा दूसरों से बात करने में खराब वो हो जाता है, मेरी इच्छा नहीं है तो मैं तो यस आई कैन सी ऑल दिस. सो हम किसको पहले हमें मैनेज करना चाहिए? अगर हमें अच्छे इंटरपर्सनल कम्युनिकेटर बनना है तो मुझे पहले मैनेज करना पड़ेगा इंट्रापर्सनल. हाउ एम आई कम्युनिकेटिंग विथ माई सेल्फ? तो दैट इज इम्पोर्टेंट. तो इस पॉइंट को याद करके रखिए कि आपकी कम्युनिकेशन आपके साथ. अच्छा, इसके लिए भी मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहती हूँ विच यू कैन राइट समवेयर. होता क्या है कि हमारे खुद के बारे में व्हेन वी आर टॉकिंग टू आवरसेल्फ, तो इसके भी तीन पर्सपेक्टिव्स होते हैं जब हम अपने आप से बातें करते हैं. तीन कर लीजिए या दो कर लीजिए. एक होता है सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम अपने को ही पहचानने के लिए बातें कर रहे हैं. तो दैट इज एन एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस.
And the second is when we are forming certain perceptions and we are telling ourselves that these perceptions are very valid and very much in place. So self awareness पे भी हम अपने आप से बातें करते रहते हैं और perception formation में भी हम अपने आप से बातें करते रहते हैं. तो self awareness में क्या challenge होता है? Self awareness में होता ये है कि जो मेरी इमेज है ना, वो खाली मेरी इमेज मेरे तक लिमिटेड नहीं है. मेरे नजरों में मेरी एक इमेज है. सो दैट इज माई रियल सेल्फ. बट मैं दुनिया के सामने एक इमेज दिखाती हूँ विच इज माई सोशल सेल्फ. एंड पीपल सी मी इन अ सर्टन वे. दैट इज माई परसीव्ड सेल्फ. सो मैं जैसे दिखाती हूँ और जैसा लोग मुझे देखते हैं, इज इट मैचिंग? दैट विल डिपेंड ऑन माई इंटरपर्सनल एबिलिटी. और मैं जो हूँ रियल सेल्फ और जो मैं बनना चाहती हूँ आइडियल सेल्फ, वो मेरा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है. तो 4 डायमेंशन सेल्फ के चल रहे हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दिस ऑल द टाइम. मैं कुछ हूँ. I am what I am. People say I am what I am. When they are very bold, very confident, that means उनका ideal self उन्होंने accept कर लिया है कि भैया real self भी यही है, ideal self भी यही है, and that's how I am. But most of us are in a conflict. So what we think हम हैं, वो हमारा ideal version नहीं है. तो बिकॉज हम कुछ हैं और आइडियल वर्जन कुछ है, तो देयर इज अ कांस्टेंट डायलॉग गोइंग ऑन विद इन आवरसेल्व्स. वो हमारी इंटरपर्सनल हो जाती है. और दुनिया के सामने जो मैं दिखा रही हूँ और दुनिया मुझे जैसे समझ रही है, वो मेरे फिर इंटरपर्सनल पे अफेक्ट कर जाती है. क्लियर what we are talking Yes, about? ma'am. सेल्फ के Yes, डायमेंशंस में, yes, ma'am. इंटरपर्सनल Yes, और ma'am. इंटरपर्सनल में क्या हो रहा है? Ma'am, would you like to share something, Dr. Shivani? Does this make sense? Yeah, it is very true, ma'am. Rightly said. Because where it changes to person. Again, I stick to my words, whatever I talk earlier, because sometimes whatever we are, we know ourselves, the same image we use to reflect to others, and others see the same thing. But again, what others see to us is their perception, how they take us. Okay, many times we are different, we know ourselves, but we imitate, or we what we can say, हम कुछ और दिखाते हैं लोगों को. No, if whether I'm weak from inside, but I say no, I'm very strong, and others see that, but they don't know whether I'm strong from inner or weak. That only I know. That is the thing, the self image or the ideal self. This is that what I think. Absolutely. So what I'm saying is कि जैसे हम दुनिया को दिखाते हैं, whatever it is, whether my strength, whether my weakness, whether my qualities, whether my abilities or disabilities, तो जो मैं दिखा रही हूँ, अगर दुनिया वही समझ रही है, that means I'm very good in interpersonal communication, because people are getting the right kind of image that I'm wishing to portray. Sometimes there's a clash, and when there is a clash, again it is going to reflect my intrapersonal. मेरा खुद का communication वो हिला जाएगा, क्योंकि फिर मुझे लगेगा कि अरे मैं तो ऐसी हूं नहीं, why are people thinking like this? तो मेरा इंट्रापर्सनल को शांत रहने के लिए और इंटरपर्सनल को शांत रहने के लिए both should match. Right. That is what I'm saying. कि अगर मेरा, if I'm understood the right way, that means my interpersonal is going all good. And because my interpersonal is going good, my intrapersonal will not trouble me too much. So management तो हम ही को करना है ना. It is said now कि before being the leaders in the class, we have to become the leaders of our own lives. And when we are holding the rein of behavior in our hand, how people are responding to me, how I am responding to them, I am more in control. So I am leading my life the way I want to.
Otherwise, others will lead my life and I'll not know where I'm going. So this is all about personal leadership. Okay, so thank you so much for sharing your inputs, ma'am. Does this, I mean, is it clear what's the connection between these two, and how should we, how one affects the other? And it is very important that we are maintaining the right balance between the two so that our own personal lives are more sorted. नहीं तो फिर कहते हैं ना कि पर्सनल लाइफ हमारी सॉर्टेड नहीं है, तो वो सॉर्टेड नहीं है तो इसलिए नहीं है क्योंकि लोग हमको वैसा समझ नहीं रहे हैं जैसा हम हैं. Then we say कि life is not sorted, and when they are we are being understood the right way, our lives are very much sorted. Yes, Yes, ma'am. right or wrong? Yes, right, ma'am. Absolutely Right right. ना. तो ये खेला Yes. किसका चल रहा है? खेला चल रहा है कम्युनिकेशन का. Everything, because communication is understanding and communication is everything. So I very strongly feel that, you know, when we control this, iska knob thoda sa control karenge, everything else in life is taken care of. So that is what it is. So let me just go to the next. और अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये होता क्यों है. जैसे मैम ने बहुत सही बताया कि किसी और का परसेप्शन कुछ और हो सकता है, मेरा परसेप्शन कुछ और हो सकता है. अगर मुझे अपनी मेंटल पीस चाहिए तो आई हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट माय परसेप्शन इज. आई कांट लेट द अदर्स परसेप्शंस अफेक्ट मी, है ना. तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दीज परसेप्शंस आर फॉर्म्ड. डू यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ दीज परसेप्शंस आर फॉर्म्ड? सो yes, abhi tak is it Yes. all Yes, going yes, okay? Yes, madam. Okay, ma'am. Okay. Want to discuss. Okay, okay, wonderful. So we will just see. तो मुझे ये बताइए पहले, थैंक यू सो मच. मुझे ये बताइए कि हमारा ब्रेन का, बिकॉज वी ऑल आर इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, है ना. तो सबसे ज्यादा टीचिंग एंड लर्निंग तो यहीं से हो रही है ना, दिमाग से हो रही है. क्योंकि brain has to be very alert, brain has to be very active, brain has to be very responsive. So my question is कि हम ये brain का कितना हिस्सा यूज करते हैं? हम brain का कितना हिस्सा यूज करते हैं? How much 50%. portion? 2%. हाँ? 2%. 2%, yes. 2% 60%. और मैम रिसर्च तो वही कहता है कि 2-3% ही हम यूज कर पाते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली करोड़ा 100% मैम. यूज नहीं कर पाते हैं. हाँ, और बाकी का 97-98% क्या है? हम अपने दिल की बात सुनते हैं. हाँ. दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं. 97-98% दूसरों के बारे में है और मेरे बारे में 2% 3% है. ओके, सो 97 जो हम कहते हैं कि हम 2% यूज करते हैं, वो हम 2% कॉन्शियस ब्रेन यूज करते हैं. कॉन्शियसली जो हमारा यूसेज हो रहा है, बाकी हमारा ब्रेन फिर भी चल रहा है, सब कॉन्शियसली चल रहा है. हमारा हार्ट चल रहा है, हमारे मसल मूवमेंट्स हो रहे हैं, हमारे दिन भर की दिनचर्या चल रही है, एंड वी मे नॉट इवन रियलाइज इट. तो वो सब कॉन्शियस लेवल पे सारी चीजें चल रही हैं. कॉन्शियसली व्हाट एफर्ट्स वी आर टेकिंग इज ओनली 2%. और अगर हम इस कॉन्शियस लेवल को थोड़ा और ज्यादा बढ़ा देते हैं, देन आवर लाइफ आल्सो चेंजेस. सो तो इसमें क्या होता है, 2%. बाकी जो आपका सबकॉन्शियस है वो तो बहुत ही स्मार्ट है ना, वो एब्जॉर्ब कर रहा है चीजें विदाउट यू इवन रियलाइजिंग. हम कॉन्शियस भी नहीं होंगे पर वो सारी चीजें एब्जॉर्ब करता जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है. सो मेनी टाइम्स वी लर्न स्किल्स. जैसे मैंने किसी से पूछा कि व्हेन डिड यू लर्न ड्राइविंग, उन्होंने कहा जब हम ड्राइविंग के लिए पहली बार मैंने गाड़ी उठाई, मुझे पता भी नहीं था, बिकॉज maybe by just watching others already the skills were there, and within half an hour I could very confidently drive some distance on my own. तो उनको पता भी नहीं चला था, सबकॉन्शियसली आ गया था. कितनी चीजें हमें पता भी नहीं चलती हैं, सबकॉन्शियसली दे आर ऑलरेडी देयर इन अ सिस्टम.
सो ये जो ब्रेन की पावर है ये हमें पता नहीं है, वी डोंट नो, बट वी आर लर्निंग थिंग्स. एंड नाउ आई हैव कम टू वन कंक्लूजन कि हम जब दूसरों के बिहेवियर को भी देखते हैं तो आइदर वी आर लर्निंग व्हाट टू डू और वी आर लर्निंग व्हाट नॉट टू डू. बोथ द वेज ब्रेन हमारा कॉन्स्टेंटली कनेक्शंस बना रहा है. So let us understand some more about the workings of brain because all intellectual people are here. अगर हम मोबाइल को मार्केट से खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले you bought a new iPhone. What is the first thing you are going to do? आप सीधे मोबाइल ऑपरेट कर देंगे कि you will do something before operating that mobile? क्या करेंगे आप? ऑपरेट द We मोबाइल, install the चार्जिंग करेंगे. ऑपरेटिंग मोबाइल के पहले आप क्या करेंगे? उसके पहले कुछ मतलब वो Check the फंक्शन चेक करेंगे मैम. configuration. We will क्या check करेंगे? configuration, function, कैमरा. हाँ, तो कुछ आप उसका मैनुअल पढ़ेंगे, Yes. Yes. शायद मैनुअल अबाउट फोन चेक करेंगे मैम हम. फोन, देखने के लिए अबाउट क्या फोन Check, थोड़ा check. चेक करेंगे, मैनुअल पढ़ेंगे और फिर आपको उसके फीचर्स पता चल जाएंगे ये लटकता है एंड तो देन यू विल ऑपरेट इट इफेक्टिवली. अगर बढ़िया किसी रहता को है नहीं मैम. पता है कि वो कैसे चलाना है और आपने पहले ही ऑन कर दिया तो हो सकता है कुछ मैल फंक्शन कर जाएगा, है ना. तो इसीलिए हम तो हैं प्रोसेस में टीचिंग और लर्निंग के. ऑनलाइन वीडियोस, ट्यूटोरियल, यस, डिफरेंट वेज. कुछ लोग उसको ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, कुछ ऑनलाइन वीडियो देखेंगे, कुछ मैनुअल पढ़ेंगे, बट देयर विल बी सम काइंड ऑफ असिस्टेंस दैट यू मे टेक, या आप किसी फ्रेंड से पूछेंगे कि भाई मैं क्या क्या करूं, इसमें कैसे करूं. तो कुछ थोड़ी सी असिस्टेंस होती है और उस असिस्टेंस से फिर हमें इजीली पता चल जाता है कि इसको कैसे फंक्शन करना है और फिर हम उसको फंक्शन करने लग जाते हैं और फिर हमारे को बहुत सारी उसमें और फीचर्स मिलते जाते हैं. द प्रॉब्लम इज कि हमारा भी ये जो सीपीयू है ना, इधर ब्रेन, वी डोंट नो हाउ इट फंक्शंस. So when we are operating any device, any mechanical device, we should know the operation system. So uski effectiveness is going to be full. But हमारे system में we are on this planet and we are functioning by default. Nobody knows what's the right way to function. We are just learning by default and learning from each other and not understanding how the brain is functioning. So, because we are in this profession where it is all about teaching and learning, I thought let us really quickly understand how do we form these perceptions. तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लें क्योंकि perceptions है तो paradigms है. Paradigm is the way we see, understand or interpret things. तो वो परसेप्शन से हमारे पैराडाइम्स बन जाते हैं, पैराडाइम से हमारे ओपिनियंस बन जाते हैं, ओपिनियन से हमारे बिलीफ्स बन जाते हैं, बिलीफ से हमारा वैल्यू सिस्टम बन जाता है, वैल्यू सिस्टम से हमारी पर्सनालिटी बन जाती है. तो अगर मुझे पहले ही पता चल जाए कि मेरा ब्रेन इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव कर रहा है, आई कैन गाइड माई ब्रेन and understand whether I'm receiving the information the right way or not, and I can train my brain. So because everyone is smart educator here, हम अगर इसको समझते हैं तो we can directly take it to our students also, and they are the ones who are in very difficult situations at times because वो तो teenagers होते हैं, adolescents years होते हैं, maybe they are struggling with their career, they are struggling with their emotions, they are struggling with so many challenges in their personal lives, with their friend circle, peer group, so many things. So empathetically, if we want to really do something to make them become better version of ourselves, ye choti choti tricks and techniques will help us in doing that. All right, so are we ready to understand a little about how does brain perceive information?
Yes. Yes, Yes, ma'am, definitely. yes. In a हम shift, लोग क्या करते हैं कि see, this is sorry, I'll just go back because ये हमारा सारे टाइम चलता रहता है सिस्टम में. Oops, can you see two images? ये हाँ, now. So this is, you can see here, distort, generalize, delete. है ना, दिख रहा होगा आपको. यहाँ पर आपको एक एरो दिख रहा होगा एक्सटर्नल इवेंट्स एंड इन्फो का, है ना, दिख रहा है एक्सटर्नल इवेंट्स एंड इन्फो. Yes, हाँ ma'am. मैम. तो ये जो Yes. एक्सटर्नल इवेंट्स एंड इंफॉर्मेशन है ये हमारे ब्रेन में जा रही हैं और ब्रेन में हमारे बड़े सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं. ये फिल्टर्स हैं हमारे, और ये 3 फिल्टर्स हैं हमारे, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन और डिलीशन के. क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत सारी है और मैं सारी इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं कर सकती, मेरा ब्रेन उतना केपेबल नहीं है. तो मैंने क्या किया, उसको डिस्टॉर्ट कर दिया, जनरलाइज कर दिया, डिलीट कर दिया और एक अपना इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बना लिया जो मेरे दिमाग में जैसे मेरी कन्वीनियंस और कंफर्ट जोन के हिसाब से जो मुझे पिक्चर चाहिए थी वो मैंने अपने दिमाग में बसा ली. उस पिक्चर से मेरे दिमाग का जो इमोशनल स्टेट है वो मैनेज हो गया. तो अगर जैसे किसी ने एग्जाम में अच्छा किया और बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, बहुत सक्सेस हो गई, बहुत बढ़िया हो गया, तो आपने उस इंफॉर्मेशन को जनरलाइज कर लिया कि चलो भाई ये तो हमेशा ऐसा ही होता है और आई विल बी ऑलवेज अ विनर और व्हाटएवर. उससे आपका ये अब जनरलाइज करके अपने अपने आप को ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कर दिया. तो आपकी इमोशनल स्टेट बहुत खुश हो गई, और जब इमोशनल स्टेट खुश हो गई तो आपकी फिजियोलॉजी, आपकी बॉडी लैंग्वेज पावरफुल हो गई, और बॉडी लैंग्वेज पावर होने से आपका बिहेवियर पावरफुल हो गया. दिस इज गोइंग ऑन एट ऑल टाइम्स. और मैं इसीलिए एग्जाम्स के लिए भी आई वांट टू शेयर समथिंग विद ऑल यू वंडरफुल टीचर्स एंड एजुकेटर्स हियर, कि जब भी हम एग्जाम करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो व्हाट आर वी एक्चुअली असेसिंग? इवैल्यूएशन होता है ना, वो इवैल्यूएशन. यस, व्हाट आर वी असेसिंग? वी आर इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस. इवैल्यूएशन मतलब होता है वैल्यू को हम असेस कर रहे हैं, और वो वैल्यू जो हम मार्क्स देते हैं वो उस बच्चे का वैल्यू असेसमेंट है. सो सपोज इफ यू आर सेइंग दैट दिस चाइल्ड इज डिजर्व्स 90%, तो आपने उस बच्चे को 90% की वैल्यू दे दी या 98% की वैल्यू दे दी. अब वो बच्चा बड़ा बड़ा खुश, उसका बिहेवियर बड़ा अच्छा, बट ये कॉलेज है, और जब ये बच्चा मार्केट में जाता है, जॉब मार्केट में जाता है, तो ये 98% की जो वैल्यू थी वो जॉब मार्केट उसको 40% पे ले आएगा कि तुम्हारे मार्क्स 98% थे पर तुम्हारी वैल्यू जो है वो 40-50% की भी नहीं है. अब क्या हुआ कि क्योंकि उसका पूरा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गया, उसकी इमोशनल स्टेट चेंज हो गई, उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया, उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम वैल्यू असेस करते हैं बच्चों की इन द कॉलेज, it should match with what the outside world is looking for, because if there is a clash तो फिर हमारी वैल्यू डीजेनरेशन हो जाता है, और डीजेनरेशन होने से फिर हमारा बिहेवियर भी अफेक्ट हो जाता है. So that is, so what is happening? We are either distorting, generalizing or deleting, और this information से मेरा सारा behavior affect हो रहा है. मैं उसको कैसे stack कर रही हूँ? तो deleting क्यों करते हैं हम information को? क्योंकि किसी भी given time पे अगर आपके मोबाइल के भी नंबर हैं, 10 डिजिट नंबर है, तो हमारे को 10 डिजिट एक बार में याद नहीं हो पाता. What do? We break it up. We break it into chunks.
जैसे मैं याद करती हूँ तो मैं 3 + 3 + 4 करके करूंगी, या 5 + 5 करके करूंगी, या 4 + 4 + 2 करके करूंगी, because information cannot be stored if it is too much. तो जब आप बच्चों को भी you can guide them when they are learning the points. They cannot learn 10 points at a go. It is always 7 ± 2. So they can do 4 + 3 + 3 से 10 करना है, या पहले 7 कर लें फिर उसको और 7 कर लें, तो ऐसे करके उनको इंफॉर्मेशन स्टोरेज में इजी पड़ेगा. तो बिकॉज माइंड की लिमिटेड कैपेसिटी है, वो आप सीधे से 10 चीजें बोल दीजिए, ब्रेन एकदम कंफ्यूज हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं होगा. एंड बिकॉज सब इंफॉर्मेशन डिलीट हो गई, अब सेकंड हम क्या करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन गई अंदर दिमाग के, उसको हम डिस्टॉर्ट कर देते हैं, विकृत कर देते हैं, क्योंकि मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं उसका डिस्टॉर्शन कर दूंगी. दैट हैपेंस विथ एवरीवन. बिकॉज वो जैसे हमने 4 + 3 वाली इमेज देखी थी, मेरे हिसाब से 4 दिख रहा है तो मुझे आपका नहीं दिखेगा, क्योंकि वो डिस्टॉर्शन उसके हिसाब से 3 दिख रहा है तो उसको मेरा 4 नहीं दिखेगा. डिलीशन हो गया. पर अगर मैं वहां जाके उसके हिसाब से भी देख रही हूँ, देन आई एम एडिंग सम वैल्यू. तो कितनी बार, जैसे अगर बच्चे अगर गए, कोई लाइसेंस के लिए गया, अब लाइसेंस के लिए वहां पर आपने गाड़ी चलाई किसी ने, और पता चला कि आप वो टेस्ट नहीं क्लियर कर पाए, तो व्हाट विल दिस पर्सन से? वहां तो एग्जामिनर वाज नॉट गुड, वहां पे वेदर वाज नॉट गुड, द रोड वाज नॉट गुड. तो आपकी जो कैपेबिलिटी है वो आपने साइड में रख दी, और बाकी जो इंफॉर्मेशन था उसको आपने डिस्टॉर्ट करके अपने दिमाग में स्टोर कर दिया कि आई एम गुड, everything else was bad, and that is the truth. That may not be the truth. वो distorted information वहां चली गई और आपने सबको blame कर दिया. कोई भी हो सकता है ये, मतलब so many times when children are not doing well, the examiner is bad, the paper is bad, this is bad, that is bad, and they will not look at the capability and skill level that they possess. So distortion of information at all times is taking place. So that is why we have to be very clear in the way we are communicating, because the mind is ready to distort. और इसीलिए जब हम बोलते हैं कि हमने तो ये ऐसा कहा ही नहीं था, तो दूसरे ने उसको डिस्टॉर्ट कर दिया ना. आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि so many times you never meant it, you never said it, you never mentioned it, but somebody has distorted the conversation and presented it in a manner which was never there. होता है कि नहीं होता है distortion? Please let me know. We read between the lines and hear what we want to hear or make it the way we want it. ये हमारी creativity होती है. Creativity चलती रहती है हमारी इन सब चीजों में, distortion में. And sometimes we are just looking to generalize things. तो हम क्या करते हैं कि ऐसा ही होता है भाई, आप किसी चीज के लिए जा रहे हैं, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो हमने जनरलाइज कर दिया, मुझे तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये हमेशा ही होता है. तो ये जो फिल्टर्स हैं, ये अनकॉन्शियस फिल्टर्स चल रहे हैं, मतलब ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड इज एट वर्क, हम कॉन्शियसली ये नहीं कर रहे हैं. आई एम नॉट प्लानिंग टू डिलीट इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट प्लानिंग टू डिस्टॉर्ट इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट प्लानिंग टू जनरलाइज, but we should be aware that it is happening at unconscious level with everyone. And that is why we have to give this room to others ki maybe they have not understood the things the right way because of the filters that are in action. क्योंकि पहले हम aware होते हैं तो हम दूसरों को भी बता सकते हैं ना. So does this make sense? Yes, ma'am. Yes. Yes, yes. Okay, okay, चलिए, wonderful. So I'll just go to this. ये जो, तो अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये एक्सटर्नल इवेंट्स एंड इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पे ब्रेन में हमारे बढ़िया डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन, डिलीशन हो रहा है विदाउट वी बीइंग इवन अवेयर ऑफ. अब जैसे आपके पास भी जितनी इंफॉर्मेशन जा रही है
उसमें से कुछ डिलीट हो रही होगी, कुछ जनरलाइज हो रही होगी, एंड आई होप नथिंग इज डिस्टॉर्टेड. सो वो अपने हिसाब से आप उस इंफॉर्मेशन को एसिमिलेट कर रहे होंगे, एवरीवन इन वन्स ओन यूनिक वे. और इस इंफॉर्मेशन के साथ मेरा इंटरनल ये इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन में एक इमेज क्रिएट करेगी, उससे मेरे इमोशंस मैनेज होते हैं, इमोशन से मेरी बॉडी लैंग्वेज होती है और उससे मेरा बिहेवियर होता है. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. सो जब हम इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करें, हाउ इज इट ऑल कनेक्टेड विथ इंटरपर्सनल? तो इंटरपर्सनल में क्या हो रहा है कि मुझे पहले अपनी इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली कन्वे करनी है. सो आई शुड बी गुड विथ वर्ड्स. I should be able to understand what people are experiencing or feeling. तो ये उनके emotions interpret करना और सेंसिटिविटी उनकी फीलिंग्स की तरफ, क्योंकि मेरी अगर इमोशनल बकेट फुल है तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स आर लैकिंग इन देयर लाइव्स एंड आई कैन बी मोर सेंसिटिव देयर. एंड बिकॉज आई एम मोर सेंसिटिव, आई एम गोइंग टू बी पोलाइट and I will not speak unnecessarily. क्योंकि जब हम unnecessarily distort करके information को बोलते हैं, that becomes gossip. So I will avoid gossip then. And if there are conflicts, I can calmly arrive at some solutions to resolve those conflicts. So would anybody like to add anything here? What have we done till now? आपको ये इंटरपर्सनल स्किल्स, डज इट मेक सेंस? क्या हो रहा है क्लास में, क्या चल रहा है सेशन में? एनीबॉडी? हेलो? Yes, ma'am. We are talking about interpersonal and intrapersonal skills. Through intrapersonal skills, we can be a big communicator with ourselves, and through interpersonal skills, we can be a good communicator with the others. Yes, absolutely, absolutely. And as said, and as we have discussed, definitely intrapersonal skill affects the interpersonal and the vice versa. हाँ, Both are linked with each other. How we feel, we used to reflect with the others, and whatever we take it from outside, it hampers our inner self. So both are interlinked. एब्सोल्युटली. सो अगर हम खाली कम्युनिकेशन का एक पॉइंट समझें तो इट विल बी इनकम्प्लीट, but communication is all about our behavior with others, so that is why these skills are very, very important, right? Yes, ma'am. Right. And especially talking to students about this, because students are at such an age where they are grappling with their emotions, where they are grappling with so many things in their lives. Unki sensitivity, unke khud ki feelings and emotions are not in place. Unka communication skills are not enhanced. So it becomes our responsibility to guide them the right way so that they can really achieve whatever they have set out for themselves. Okay. So we get back to our topic on interpersonal listening. कल मैंने किया था. Do you remember what kind of listeners should we be in our lives? कैसे listeners बनना चाहिए हमें? Empathetic listeners. Because empathetic listeners listen with their heart and mind. So they are very, very empathetic. Listening is all about putting yourself in the other person's shoes. So listening can make or break a relationship or a business deal. And that is why it is extremely crucial. हम इसको सोचते नहीं है कि सुनने भी कोई कला है, but most of the times people are when they are having a conversation, पता चला कोई भी सुन नहीं रहा है. You are just waiting for your chance so that you can speak up. So listening is a very important skill. Verbal interpersonal skills. तो ये जब आपको listening and questioning है,
and the way you are, how your speech is clear, clarity of speech hai, word choice hai, tone and volume hai, this we have already done yesterday. Politeness hai, and following basic rules of it or etiquettes. कल हमने non-verbal भी किया था, है ना? तो do you remember the body language is all about non-verbal? Then problem solving, how am I listening? तो वही, क्योंकि वो empathy आ गई वहां पे, आपका self control and self confidence is all about your emotional management. And time management is, I cannot talk too much. The whatever is required, there is a certain time limit for that. So in our hustle and busy lifestyle, time management abilities are becoming more and more important. So time management is all about becoming managers of your own lives, managing yourselves. So ये जो चीजें हैं, ये आपकी पर्सनल लीडरशिप के लिए बहुत important है. Otherwise, others will lead you. So are you leading your own life, or are others leading your life? So that is important. So put these in practice. तो हर एक की एक identity होती है, I. That identity is I. What I am, that is my identity. अब beliefs and values होते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, हाँ कि ना. तो I can't, ये मेरा वैल्यू सिस्टम बोल रहा है कि मेरे से नहीं हो सकता. क्या ये नहीं हो सकता? एबिलिटी नहीं है मेरे में, बिहेवियर इधर इधर. So I believe that I have to become a better communicator, but because of my value and belief system, maybe, or capability, maybe I cannot be that good a communicator in college or at home or somewhere, because others are affecting my mindset. So personal leadership में क्या है? You are the in charge. You are the manager. You are the leader of your life. That is why you have the right to decide. You have the freedom to choose how you wish to live your life. So that is why this flexibility in behavior is extremely crucial. So I can, I will, I choose. These are the empowering words which can really bring about a change in the way I'm thinking or the way in which I'm behaving. So, because you become a leader, you can create more leaders. आजकल leaders वो नहीं हैं जिनके पास बहुत सारे followers हैं. Leaders कौन हैं? Who are creating more leaders. So, interpersonal skills से आप leaders create कर सकते हो. You become the leader of your own life and you create leaders in the outside world also. That is important. Okay, so whatever we have done till now, does this make sense? क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया या कैसा हुआ? I'll just quickly, sorry, I'll just go back. I think there is something okay, it's all going good. Would you like to add something from your side? अभी तक जो हमने किया, would you like to add something from your side? नहीं कुछ Madam, आप हाँ Madam, may I बताइए. ask what do you mean by dual personality? Dual personality? Dual personality जैसे हाँ, मतलब yes. dual personality माने जैसे split Conflict. personality हो जाती है कभी कभी. डुअल पर्सनालिटी माने कुछ लोग किसी के सामने कैसा बिहेव करते हैं और किसी के सामने कैसा बिहेव करते हैं. डज इट मीन दैट सर? Okay, okay, madam. नहीं, मतलब डुअल पर्सनालिटी से क्या आपका तात्पर्य ऐसे बिहेवियर की तरफ है जो लोगों के साथ बदल जाता है, या क्या है डुअल पर्सनालिटी, या स्प्लिट पर्सनालिटी है, या क्या है वो आप थोड़ा सा बताएंगे सर?
वो इंफॉर्मेशन अपन डिस्टॉर्टेशन जो करते अपन, हाँ वो अभी दूसरे से बिहेव अलग करना और वही वैल्यूज दूसरे तरफ लगाना, मीन्स डिफर होना वैल्यू पे, ऐसा कुछ था क्या मैडम? अच्छा अच्छा। हाँ। तो डिस्टॉर्शन जो हम करते हैं वो जैसे देखिए कितनी बार कोई भी चीज घटना घटती है और हर एक कुछ लोग उसको कहीं सही तरीके से शायद लेंगे। जैसे बहुत बार हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं या बहुत बार हमारे पास ऐसे मौके आते हैं जो कि शायद हमारी बेहतरी के लिए आते हैं, पर हम उनको देख नहीं पाते क्योंकि मेरे दिमाग में वो डिस्टॉर्टेड इमेज आती है कि इट हैज कम फॉर समथिंग नेगेटिव। तो वो डिस्टॉर्शन के कारण वो अपॉर्चुनिटी भी हाथ से चली जाती है। जैसे कितनी बार आप बच्चों को बहुत सही गाइडेंस दे रहे हैं सो दैट दे कैन हैव बेटर फ्यूचर। आप तो बिल्कुल सही गाइडेंस दे रहे हैं कि उनका फ्यूचर आगे कैसे बेहतर हो सकता है, पर अगर वो सही गाइडेंस सही तरीके से ना जाके डिस्टॉर्टेड तरीके से बच्चे के दिमाग में चली गई तो वो आपकी गाइडेंस को मिस गाइडेंस समझ लेंगे एंड दे विल नॉट एक्ट ऑन इट। सो डिस्टॉर्शन में क्या होता है कि हम शब्दों को तोड़ मरोड़ के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उनका कुछ अर्थ निकाल देते हैं जो कि शायद था ही नहीं कभी, पर हम उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। कभी कभी डिस्टॉर्शन में ऐसा हो जाता है। और अगर हम अवेयर हो गए कि भाई समवेयर माय ब्रेन इज डूइंग इट विदाउट मी इवन रियलाइजिंग दैट थिंग्स आर बीइंग डिस्टॉर्टेड, तो हम थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं और हम अपने कॉन्शियस ब्रेन को बोलते हैं कि भैया कीप अ चेक, don't distort things. I should understand things the right way in the perspective that they are. और जब हम इसकी तरफ consciously work करते हैं तो over a period of time you will realize that you are the people around you are also seeing the things the way you want them to. क्योंकि आपका बिहेवियर जब चेंज होता है तो लोग भी वही समझते हैं जो आपका चेंज्ड बिहेवियर से जैसा आप लोगों को अपने आसपास बनाना चाहते हैं, है ना? तो ये ओके, ठीक है मैडम। हाँ, does this answer your question, sir? Does this answer your question? I got it. ओके ओके, यस। बट ये जैसे बिहेवियर है तो बिहेवियर की कोई एक परिभाषा तो हो नहीं सकती है। हम जितने लोग हैं उस सबके अलग अलग दिमाग की फंक्शनिंग्स है, अलग अलग यूनिकनेस है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव टू एक्सेप्ट इट, अंडरस्टैंड इट, बी एम्पैथेटिक, सी ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, be considerate and compassionate. Only then we can make this world a better place. And because we are all leaders, so we have this responsibility to create more leaders, right? So a sign of a good leader is not how many followers you have, but how many leaders you create. That is extremely essential. तो जैसे आज आज हमारे वर्ल्ड में कितने ग्लोबल सीईओज इंडियंस हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आपके आज क्लासरूम में हैं या जो अभी मे बी अराउंड यू, दे कुड बी द ग्लोबल सीईओज ऑफ टुमारो। सो वी डोंट नो एज येट, अभी तो आज हमें नहीं पता है, पर हो सकता है वो आने वाले समय में ग्लोबल सीईओज बन जाए। So that time we can say that we were so conscious of this at this point, कि we could guide these children the right way, and that is why we take pride in their accomplishments, and that is the teacher's biggest reward. That is the teacher's biggest accomplishment. So, and that is our biggest pride, all education workforce ka. Yes, so these were some of the tricks and techniques to become better in our interpersonal communication skills, just an extension of what we had done yesterday. उसी को हमने थोड़ा और आगे ले गए. So thank you so much. If you have any feedback, please feel shared to
please feel free to share your feedback, because that is very, very important. And I will stop sharing now and get back here. Yes. So please, आप कुछ भी अगर अपना point of view express करना चाहते हैं या share करना चाहते हैं, तो हमारे पास 2-4 minutes हैं. We can do that. Okay, I'm getting all these non-verbal written communication आ रहा है that you are okay with what we have done today. आप अगर कुछ feedback देना चाहते हैं, तो please, 2 minutes are there. You can give your feedback also. Yes. Anyone? What is Ma'am, your... I have a question, ma'am. Yes. Okay. We are getting the screen is really... Yes. Yes, sir. मैम टीचर रोल जो